इस वक्त दुनिया में इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। यानी कि 15 दिन से पहले अमेरिका ईरान युद्ध में शामिल हो गया है। हालांकि ट्रंप ने इस ऐलान के बाद यह कहा कि अब हमें शांति को मौका देना चाहिए, मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरान इसे बख्शने नहीं वाला है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अमेरिका को कहा था कि अगर तुम युद्ध में शामिल होगे और अगर तुमने बुरी नजर डाली हमारे परमाणु ठिकानों पर, तो इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि B-2 बॉम्बर्स, जिसको लेकर मूवमेंट लगातार हो रही थी, वो B-2 बॉम्बर्स इसी बड़े हमले के लिए थी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान क्या किया आपकी स्क्रीन पर। हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अपना हमला सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सारे प्लेन अब ईरान की एयर स्पेस से बाहर निकल चुके हैं। फोर्डो, जो कि मुख्य ठिकाना था, उस पर बमों की पूरी बारिश की गई। हमारे सारे फाइटर जेट्स अब सुरक्षित तरीके से वापस लौट रहे हैं। हमारे शानदार अमेरिकी सैनिकों को बधाई। दुनिया में और कोई भी मिलिट्री ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। अब वक्त है शांति का। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह की तस्वीर। जी हां, इस ऐलान के बाद यह आज सुबह की तस्वीर है, जो कि व्हाइट हाउस की है, जहां वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, यानी हेलीकॉप्टर नंबर 1, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए होता है। और उसी के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया। जी हां, और फिर उन्होंने दुनिया के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए हम वहीं का रुख करते हैं। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill.
Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. और जाहिर सी बात है इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब कोई भी तेल के जो जहाज़ हैं उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब भारत जैसे कई देशों में अब तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। यानी कि नेतन्याहू की जिद और अमेरिका की दबंगई का खमियाजा पूरी दुनिया अब भुगतने वाली है। दोस्तों, यकीनन अमेरिका के इस कदम को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। उनके न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर बहस हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कई लोग कह रहे थे कि हमें इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इस युद्ध में शामिल होकर इन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोलकर कहीं ना कहीं अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हो रहा है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ईरान माफ नहीं करने वाला है। ईरान इसकी प्रतिक्रिया देगा, और स्वाभाविक सी बात है, जब हम प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया सामने आने वाली है उन तमाम अमेरिकी बेसिस के जरिए जो मध्य पूर्व में मौजूद हैं। ऐसे कई अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं जिनके पास सुरक्षा भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, इसको लेकर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई होगी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब यह खबर ब्रेक हो रही थी तब इस बारे में अल जजीरा ने क्या कहा, आइए सुना जाए। 2 मिनट का एक क्लिप। U.S. had struck 3 nuclear facilities in Iran. Well, Mohammed, now Donald Trump has taken to Truth Social again, announcing that he will be addressing the American public about these U.S. strikes on Iran's nuclear sites in about an hour and a half's time. He went on to say this is a very successful military operation in Iran. This is a historic moment for the United States of America, Israel, and the world. Iran must now agree to end this war. Thank you. Those word for word from his latest Truth Social post. And so when he does speak to the American public during prime time in about a little over an hour's time, he will not only have to be explaining these strikes, but as well as trying to sell it, really, that it was a good idea to the American public. You know, this is the first time that the U.S. has directly bombed Iran, a major infrastructure, since the Iranian Revolution. And this is something, in fact, that a series of American presidents from both parties have tried to avoid up until this point. Donald Trump is calling it a historic moment again. He says not only for the U.S., but for Israel and for the world. So certainly trying to sell this as having made the right call. That is also being echoed by some of his supporters, including Senator Lindsey Graham, who is an Iran hawk, saying that this was the right call on X. But whether or not the U.S. public believes that as well remains to be seen. They were really mixed going into this. There was sparse polling before this action was taken on whether the U.S. should directly strike Iran. And the Washington Post conducting a poll finding that most people who answered that said that the U.S. should not be taking this route because it would be opening a new dangerous phase of the war. Many Americans, though, 30% at that time, said they simply didn't know. This is not something that's been top of mind for the U.S. public. So much other domestic headlines taking that attention away. But now, front and center, as Trump will talk about this directly to the American public in about an hour and a half.